Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. Good morning, Shiv, Sonu, Nitika, Tanvi, Jayashri, Rokala, Jayashri, BK, Krisma. Good morning. Good morning, guys. I hope my audio, the visuals, everything is fine, guys. Just give me a thumbs up in the chat box that everything is like perfect, so that I can start with the session. So yes. Good morning, guys. Good morning. Perfect, guys. Good morning. Tanupriya, good morning, beta. Aditya, good morning, good morning. So just give me a thumbs up in the chat box. Start. Everything is like fine, and I can start with the session. Yes, Jayashree says, yes, sir, everything is good. So we can start with the session. Manish, okay, perfect, beta. So I will be starting with the very first topic of today, that is the development of the stomach. Already have discussed the ligaments and the mesentery, and I have already given you an overview that it is the fusiform dilatation that is happening between third and that is happening between the fourth and the fifth week, right? So yes, let's start with the session. Yes, let's start with the session. Okay. Sure. So remember, guys, that for example, okay, let us. Hmm. So yes. You already know that we have this particular tube, right? We have this gut tube, and you already are aware that it is derived from the yolk sac, right? It is derived from the yolk sac, and this gut tube, it is endodermal in origin. It is endodermal in origin क्योंकि yolk sac endoderm से ही बना था. Yolk sac ही endoderm से बना था. वीर दोषी, नव्यश्री, good morning, guys. Now, guys, what happens that we already know that this gut tube, it is basically divided into three, right? We have the foregut, we have the midgut, and we have the hind gut, right? We have the hind gut. Now, this foregut, if I just take this foregut in, okay, I want to draw an enlarged view. So if I just try to draw the enlarged view, guys, now see over here. Now this is the foregut. Okay, this is the foregut. And this foregut has two parts, right? We have the cranial part of the foregut. Okay, we have the cranial part of the foregut, and we will have the caudal part of the foregut as well, right? So the distal part or the caudal का मतलब tail वाला part हो गया, cranial मतलब head वाला part हो गया, okay? Or I can say the lower portion or the caudal part will actually have a dilatation, and that dilatation, it is called as the fusiform dilatation. Fusiform का मतलब क्या होता है बेटा, कि दो एंड्स बिल्कुल टेपरिंग होते हैं और बीच से इट जस्ट वो बीच से मोटा हो जाता है. ठीक है, both the ends are tapering और बीच से काफी ज्यादा it is like thickened from between, right? And ultimately the duodenum will be formed, and duodenum is derived from both the parts like foregut also and midgut also. So जब हम duodenum पढ़ेंगे कल तो हम उसमें ध्यान से देखेंगे. So we already know that we have the lower portion of this foregut, right? We have the lower portion of this foregut, and it develops into fusiform dilatation, right? It shows fusiform dilatation, dilatation, and it is between fourth week and fifth week. It is between fourth week and fifth week. Around this much time, this particular dilatation is seen. Now, I want to here demonstrate few things in this dilatation, guys, so that when I say about rotation, so the picture is pretty clear right now. So everyone knows that this is our median axis. Body ka midline you can everyone see over here, right? Body ka midline. तो दिस पर्टिकुलर डायलिटेशन, ये जो गट ट्यूब है ये बिल्कुल बॉडी के मिडलाइन में डेवलप हो रही है, तो ये डायलिटेशन भी बिल्कुल मिडलाइन में होगी. सो इफ आई जस्ट वांट टू मार्क द एरियाज, गाइस, so you already know that suppose this is the fusiform dilatation that you can see, right? And now if I just divide this dilatation, if I just divide this dilatation from between
So you guys will be able to see that it is divided into two segments, right? It is divided into two segments. Okay. We have the right segment, we have the left part, right? आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे वाला हिस्सा. और पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर. तो अगर एक सिलेंडर को देखा जाए तो एक आगे वाला हिस्सा हो गया. We have the anterior part, that is the ventral part, the dorsal part, that is the posterior part. The okay, this one will be the right part and this one will be the left part, right? So इस तरीके से हमें पता चल गया. अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करूं, if I just want to see the cross section of this, okay, if I just want to see the cross section over here, so guys, like it will be like this, guys, right? So it will be somewhat like this. अगर मैं इसको बीच में से काट के देखने की कोशिश करूं, so you already know this is the anterior part, this is the posterior part, this is the left part, and this is the right part, right? Along with that, guys, I wanted to mention two things over here that, okay, towards the right part, okay, I just will erase this right and left because I want to draw something over here. Yes, towards the right part, okay, we have vagus nerve, okay, that is the right vagus nerve, okay. So we have this vagus nerve that is on both the sides of this tube, okay, and towards the left part also we have the vagus nerve. So I will tell you why the left vagus कैसे it will supply and the right vagus how it will go towards the left part. So during the rotation I will just clear the concept also. So in the starting, remember that on the right side we have the right vagus and on the left side we have the left vagus nerve, just on the sides of this dilatation. क्या इतना क्लियर है सब लोगों को? टिल नाउ दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. ऑडियो विजुअल सब कुछ फाइन है? ये भी बता देना जो लेट आए हैं. सो यस, चल. दिव्याश्री वेरी गुड. फन मोड यस. तनुप्रिया यस. राना सुलेमान बेटा गुड आफ्टरनून. क्रिस्मा यस. नितिका डिम्पल गरिमा वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. चल नाउ रिमेंबर गाइस, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. डायग्राम बना लिया हम लोगों ने, अब कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. सो रिमेंबर गाइस दैट द स्टमक इट डेवलप्स. देखो क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी एग्जाम्स में कि स्टमक का डेवलपमेंट यू हैव टू राइट द Alhadita beti, Dr. Alhadita beta, it has already started. My general embryology lectures are already there on the YouTube live. I've started with the GIT embryology right now and I'm discussing the core surgery also with this. The integrated surgical portions also with this along with the management. So if you just go through the live section beta, you will get it. So I'm just taking the class on the daily basis. So yes. Now remember guys that it develops from the distal part of foregut. Okay. Now remember that it is initially a simple tube. It is initially a simple tube. Okay. Now what is happening? There is a slight dilatation. Okay, there is a slight dilatation in the stomach. Okay, this stomach in the stomach occurs. Okay, and stomach becomes fusiform in shape. Stomach becomes fusiform in shape. Not like this, Alhadita beta.
एक्चुअली आई एम टीचिंग सर्जरी ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस. अब सर्जरी पढ़ने के लिए आपको बेसिक स्टमक की एम्ब्रियोलॉजी आनी चाहिए, या पेनक्रियाटिक जो कंजेनाइटल पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स है, तो अगर उसकी सर्जरी आप पढ़ रहे हो, पेनक्रियाटिक डिविजन, एन्युलर पेनक्रियास, अगर आपको नॉर्मल डेवलपमेंट ही नहीं पता पेनक्रियास का क्या है, तो उसकी कंजेनाइटल एनामली कभी समझ में नहीं आएगी, वो फिर आप लोग रट्टा लगाओगे. So it's better if you just see the embryology part and then come on to the surgical parts. I will discuss the questions also that has been asked in the exams from these portions. So I personally believe that this is like an important aspect that you have to study for exams. So there is a slight dilatation in the stomach and stomach becomes fusiform in shape. Now remember guys, the posterior border grows faster than its anterior border. Then its anterior border. Okay, then its anterior border, right? Resulting in, so it results in the anterior border का size छोटा रह जाएगा. So in future it will form the lesser curvature of the stomach. Okay, we have two curvatures of the stomach. The lesser curvature, okay, results in the anterior border, and the posterior border, will become the greater curvature. Greater curvature. The posterior border becomes the greater curvature. Now, I hope this particular portion is clear. So let us just come on to this diagram, guys, right? So you are very well aware that this is the longitudinal axis, and you can see that how the okay, how the posterior border is growing faster, and it is in turn forming the greater curvature of the stomach. Okay, and the lesser curvature it is formed by the anterior border. It is before the it is after the rotation, guys. I will tell you what happens actually during the rotation, how this particular alignment you will see. So now we will start, guys, rotation of the stomach, and then again we will come to that particular picture. Then again we will come on to that particular picture. So no need to worry about that. So rotation of the stomach, guys. Now, rotation of the stomach is mainly due to two reasons. The very first, guys, it is differential growth of the stomach. We have the differential growth of the stomach. And the secondly, it is the growth of the liver. Growth of the liver. We will again study these 2 points. So before that, just remember that what is happening. Rotation means there will be a 90-degree clockwise rotation. Now, I want your participation, everyone. Now, the tube is in the midline. The tube is in the midline, guys, right? We have the anterior part of the tube. We have the right part, the left part. Oh, sorry. मेरा तो यहाँ पे ये हो जाएगा right part, the left part, okay, and we have the posterior part. So if we have the 90-degree rotation, guys, what will happen? This anterior border, if I just, it is now in front, guys, right? If I just rotate it 90-degree, so if I just rotate it 90-degree, this, the anterior border will become, it will be towards right, okay, and the posterior one will go towards left, right? So the anterior border, okay, will become towards the right, and it will become the lesser curvature, and the posterior one will become towards the right, and it will become the lesser curvature or greater curvature, right? So yes, now if we are talking about this 90-degree shift, yeah, Chaitanya sahi 90-degree shift hai, okay. So remember, guys,
So 90-degree clockwise rotation, it is actually taking place if we just talk about the longitudinal axis. Longitudinal axis. So you can see that this particular portion is going like this. तो ये तो हमारा क्या बन जाएगा, लेसर कर्वेचर, और ये पीछे वाला that will be the greater curvature. So जो anterior part है it will come towards the left, और जो posterior part था वो कहाँ आ जाएगा, it will come towards the right, right? So yes, ये anterior है ना, तो 90 डिग्री में सिर्फ 90 डिग्री घुमा है, तो it will come towards the left, right? So yes, remember that. So coming on to the longitudinal axis, remember that the anterior border becomes right, it becomes right, okay? And towards the right, you already know we have the lesser curvature of the stomach. We have the lesser curvature of the stomach. And just write it over here. We have the posterior border. पीछे वाला posterior border वो भी shift होगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, right side पे, तो वो right curvature यानी कि greater curvature बनाएगा. So posterior border will, so anterior border will become left. मैंने वो गलत लिख दिया. Yes. I'll just correct it. हाँ नहीं, anterior border, sorry, हाँ सही लिखा हुआ है. तो the posterior border will come towards the left. Okay. So हाँ, just yeah, it becomes left. मेरे कैमरे का डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है, जो यहाँ दिख रहा है वो अपोजिटली मैं बैठा हुआ हूँ. So yes, it becomes the greater curvature, right? Now you guys will tell me. Lesser curvature, which nerve will supply, and the greater curvature will, which nerve will supply. So I'm waiting for your answers in the chat box, guys. You will tell me, guys, now कि कौन सी nerve क्या supply करेगी. हमारे पास initially we have the left vagus nerve and the right vagus nerve. ठीक है, तो right vagus nerve is on the right side. Yes, वेगस ग्रेटर, कौन सी वाली वेगस, हाँ ठीक है, वेगस नर्व सप्लाई करेगी, बट कौन सी वाली, किस पोर्शन को. माय क्वेश्चन इज विच. Okay, greater curvature will be supplied by which vagus nerve, and the lesser curvature will be supplied by which vagus nerve. Now the right is supplied by the, okay, perfect. So you already have answered it. Yes, the left vagus nerve will supply the the lesser curvature, and the right one will supply the greater curvature. Yes, very good, guys. So remember, if we like talk about, we have something rotation happening around the transverse axis also. Okay, so remember, guys, that before rotation, you already know the cranial end and the caudal end of the tube, they all lie in the median plane. Right? The cranial and the caudal ends. So the cranial end and the caudal ends both will lie in the median plane, right? They all will lie in the median plane. But after rotation, okay, after rotation, what will happen? The cranial end
will move towards the left, okay, and slightly inferior and a little bit inferior, okay, and the caudal end will move towards the right and slightly superior, okay. So you can very well see, if we talk about the cranial end is going towards the left part, right, and the caudal end is going towards the right part, okay. So yes, after rotation, the cranial end is going towards the left and slightly inferior, and caudal end is going towards the right and slightly superior, okay. यस हाँ वो वाला पॉइंट ठीक है, वो वाला पॉइंट ठीक है, राइट। चल अब इसको एक बार ना इस डायग्राम से भी देख लेते हैं, एक बार इसको इस डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो यू कैन वेरी वेल सी कि ये स्टमक है बेटा, ठीक है, डेवलपिंग स्टमक है, और ये हमारा प्यारा क्या है, लिवर, ठीक है। और ये सेजाइटल सेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सेक्शन कौन सा है, इट इज द सेजाइटल सेक्शन। बॉडी को साइड से कट किया गया है, और आई एम जस्ट लुकिंग फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द साइड। मैंने इस तरीके से बॉडी को मिड लाइन में काटा, एंड आई एम ट्राइंग टू लुक द बॉडी फ्रॉम द साइड, राइट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ you already know that these all are developing, और तो इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखनी है बेटा, कि सपोज ये देखो, ये आगे वाला हिस्सा हो गया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये पीछे की तरफ हो गया दैट इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो इफ यू जस्ट ट्राई टू locate this guys, right, and I'll tell you why the rotation is happening। वो जो दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको भी थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, we'll just try to incorporate it also। So you already know that guys, that in between we have the stomach। I'm just showing a cross section at this level, I'm just taking a cross section at this level and just trying to show it guys। So this is the stomach guys, right, and from the stomach to the anterior abdominal wall, I'll just draw it nicely so that you so yes, you already know that this part is the stomach part, right, and this is the anterior abdominal wall। I'm writing it in short बेटा, आप लोग को पहले ही पता है, we have the anterior abdominal wall, और पीछे स्टमक की तरफ, पीछे की तरफ देखो क्या है, ये posterior abdominal wall है, posterior abdominal wall। स्टमक आगे से भी जुड़ा हुआ है और पीछे से भी, इट इज सस्पेंडेड बाय द मीजोगैस्ट्रियम, मीजोडर्म दोनों तरफ है, आगे भी है और पीछे भी है। तो आगे वाले मीजोडर्म को ना, जिसको ये डायग्राम नहीं समझ आया था तो वो दोबारा से इसको यहाँ पे देख सकता है। तो आगे वाले जो मीजोगैस्ट्रियम मीजोडर्म है उसको हम लोग नाम दे देंगे, वी हैव द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, राइट। So this is the ventral mesogastrium, and we have the dorsal mesogastrium। डॉर्सल mesogastrium। ऑब्वियस सी बात है कि अंदर अगर वी हैव द yolk sac वाला जो पार्ट है वो अगर एंडोडर्म का बना हुआ है तो उसके आसपास मीजोडर्म की पूरी कवरिंग आ जाती है, राइट, मीजोडर्म की पूरी कवरिंग आ जाती है। सो यस गाइस, नाउ इन द वेंट्रल पार्ट गाइस, ये पूरा जो पिंक कलर का आप लोग को दिख रहा है, इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, लिवर दिख रहा है ना। तो एक छोटा सा लिवर भी बना लेते हैं, एक छोटा सा लिवर भी बना लेते हैं, और यही रोटेशन समझाएगा हमें। छोटा सा लिवर बना लिया, ठीक है, और पीछे की तरफ आपको अगर ध्यान से देखोगे, सो वी हैव द स्प्लीन पार्ट, पीछे थोड़ा सा विच इज टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्लीन है, स्प्लीन है, मैंने एस से मार्क किया हुआ, ठीक है। अब
क्या हो रहा है कि अब हो जाएगा 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो अब क्लॉकवाइज रोटेशन अगर देखोगे बेटा, सो व्हाट विल हैपन, द स्टमक विल रोटेट, तो ये हो जाएगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, मैंने आगे से पीछे की तरफ गया हूं मैं, ठीक है। तो आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल था, फिर स्पेस मतलब जो मीजोगैस्ट्रियम है, फिर लिवर, फिर स्टमक, और पीछे क्या है, स्प्लीन। इसको मैंने इस तरीके से बनाया। आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो उसके लिए भी एक थम्स अप दे दो कि पिक्चर समझ में आ गया, क्योंकि इससे काफी सारे लिगामेंट्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ उसका एक थम्स अप जरूर दे देना, दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ओरिएंटेशन की मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस, डिंपल, वीर, तारा, वेरी गुड, वेरी गुड, कपिल, वेरी गुड। चल, सरिष्टा, तनुप्रिया, मनीष, बाकी सब भी आंसर दे दिया करो, सो दैट आई हैव एन आइडिया दैट यू गाइस आर अटेंडिंग द सेशन अभी। ओके, नाउ नाउ गाइस, आफ्टर द रोटेशन, नाउ दिस स्टमक will become like this. सपोज ये स्टमक था, अब 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। Now you already know this is the stomach, okay, this is the stomach, and this will be the liver. This will be the liver, okay. So you already have that, yeah, the anterior vagal, okay, we have the vagus nerves over here, which is actually in the mesentery, guys, you can see, and we have the posterior vagal also, and we have the developing spleen over here, okay. I've just tried to show you a picture like this. Due to the differential growth of the liver, the stomach is actually pushed to one of the sides, okay. It's not only that the stomach is only growing, it is due to the differential growth of the liver as well, okay. नहीं, liver will come on the right side ना बेटा, stomach will go towards the left ना। देखो 90 डिग्री रोटेशन होगा, तनुप्रिया, जस्ट सिंपली लाइक दिस, जस्ट सी बेटा, 90 डिग्री हम लोग रोटेट करा रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, द लिवर विल बी पुश टू द राइट साइड, राइट, द लिवर विल बी पुश टू द राइट साइड, है ना बेटा। डायग्राम में देखो, डायग्राम से बहुत क्लियरली क्लियर हो जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा लिवर, ठीक है, एंड स्टमक विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। लिवर 90 डिग्री, लिवर भी तो रोटेट करेगा ना बेटा, लिवर भी तो रोटेट करेगा, तो आगे जो लिवर है वो कहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा बेटा, ये राइट साइड है, मैंने अगर लेफ्ट बोल दिया तो जस्ट, ये राइट साइड है बेटा, और ये लेफ्ट साइड है। जब 90 डिग्री रोटेशन हो रही है, स्टमक ने रोटेट किया, तो लिवर ऑल्सो कम्स टू द राइट साइड, ओके, लिवर ऑल्सो कम्स टू द राइट साइड, ठीक है। स्टमक जा रहा है, रोटेट कर रहा है, तो लिवर भी तो रोटेट करेगा, और लिवर का साइज इतना बड़ा होता जाता है कि इट जस्ट पुशेस द स्टमक टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ज्यादा उसको लेफ्ट की तरफ पुश कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन नाउ, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, द रोटेशन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। फटाफट से एक थम्स अप दे दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, और ये पूरा जो है आप लोगों को दिख ही गया है, ठीक है। यस, क्लियर।
चलिए बहुत इजी था, ऐसा तो खैर उसमें कुछ था नहीं। यस, congenital hypertrophic pyloric stenosis. Now guys, you already know the parts of the stomach up till now. I believe that you guys already know. तो पहले हम लोग इसको एक बेसिक तरीके से देखते हैं. We have the fundus of the stomach, right? And you already know that this is the stomach, guys. This is the stomach, right? Now, in this stomach, you can easily see we have the lower esophageal part. Okay, we have the lower esophagus wala part. Esophagus aa raha hai upar se. We have the fundus part of the stomach, right? We have the fundus part of the stomach. This part is the greater curvature, guys, right? This is the greater curvature of the stomach. We have the lesser curvature of the stomach, right? And at last we have the pyloric part of the stomach. Okay, this is the pyloric part of the stomach. Pyloric part of the stomach. तो stomach के parts clear है, body होता है, मतलब fundus होगा, body होगा और pylorus होता है. So we have actually ये इस एंगल से towards the greater curvature, if we just try to draw a line, this is the fundus part, फिर आ जाएगा body part हो जाता है, the major area that is covering, और फिर नीचे आ जाता है pyloric part, right? The pyloric part, right? So now this is an important surgery topic. एग्जाम में इससे हर बार क्वेश्चन आता है. If we talk about the MCI एग्जाम, इसमें हर बार क्वेश्चन आता है. So yes, MCI एग्जाम में तो this is an important topic. इसमें तो पहले डॉलर लगा लो, $2, $3, $4, जितने डॉलर्स लगाने लगा लो, because this is an important topic and it's mostly like it is asked multiple number of times. अब pyloric part जो होता है लास्ट में होता है, we have the pyloric sphincter. अब जो भी फूड आता है बेटा, whatever food is coming through the esophagus, it goes into the stomach, and from the stomach it will go to the duodenum. और duodenum के भी चार parts होते हैं. We have the first part of the duodenum, right? We have the first part of the duodenum, फिर second part, third part, fourth part. तो stomach से duodenum, that is the part of the small intestine, duodenum, jejunum, ileum. So whatever food is going towards the duodenum, it is passing through this pyloric part. और pyloric sphincter होता है जो regulate करता है all the food that is coming into this particular stomach. Now guys, now this pylorus or this pyloric part, it is composed of muscles. Okay, this is composed of muscles. ठीक है, जो sphincter है. Now what happens if the muscles, okay, get hypertrophied? Okay, देखो hypertrophy का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना. ठीक है, साइज में बढ़ जाना. If we talk about the term hypertrophy, increase in the cell size. I'll just write it for you so that you guys should know that hypertrophic basically means we have the increase in cell size, right? And stenosis का मतलब होता है बेटा obstruction. Obstruction. Stenosis means obstruction. Stenosis means obstruction. Now guys, what is happening कि अगर इनकी जो मस्कुलेचर सेल्स होती है, जो मसल वाली जो सेल्स होती है which is present at this particular pylorus, अगर उसमें हाइपरट्रोफी हो जाए, okay, and that is congenitally or idiopathic. The idiopathic का मतलब होता है बेटा when we don't know any reason, right? Or mostly it is congenital only. So if the pyloric muscles basically undergo hypertrophy, what will happen, guys? Tell me in the chat box what is the thing that will happen. It will block the pathway. Okay, whatever food, it will not be able to move down, right? Whatever food the child is taking, okay, it will not be able to pass into the duodenum due to this particular hypertrophy, right? So remember guys, starting with the surgical aspects over here, it is congenital only. So we have to discuss it is more, yes, digestion will remain incomplete. ठीक है, obviously बात है. Yeah, because all the digestion process is getting completed in the small intestine, duodenum, jejunum, ileum. So it is more
common in males followed by females. Okay, ये देखा गया है that the ratio is 4:1. ये पता है मेल का साइन होता है ये, और ये फीमेल का होता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं. ऑल आर MBBS students now, so I now remember guys, it is actually the first born male child in the family. Okay, so it is the first studies have shown that the first born male child is affected. Okay, now an important question that has been asked in the exam multiple number of times, that is associated with maternal erythromycin intake, that has been asked in the exam. Okay, डॉलर लगा लो इस पे. Associated with maternal erythromycin. एरिथ्रोमाइसिन क्या होती है, फटाफट से बता दो जल्दी से. व्हाट इज एरिथ्रोमाइसिन गाइस? इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. What is erythromycin guys? अब अगर मदर ने, if the mother has taken erythromycin during the pregnancy period, that is actually associated with this. Yeah, it's a macrolide, it's an antibiotic. Normal bhasha mein it's an antibiotic. You will discuss it in pharma. Okay, it is an antibiotic, it's a macrolide guys, right? So yes. Now what is the reason over here guys? That is abnormal hypertrophic pyloric muscle that I have already discussed. We have the abnormal hypertrophic pyloric muscle. Okay, so now if the muscle is hypertrophied, what it will lead to? It will lead to functional gastric outlet obstruction. Okay, obviously बात है, the contents of the stomach will not be able to pass into the duodenum, so that is the functional gastric associated with the stomach outlet. The outlet is blocked, obstructed, so it is called as the functional gastric outlet obstruction. Okay. Now what are the clinical features associated with this particular patient? So yes, before coming to the x-ray guys, let us just discuss the clinical features, how the patient will present to you. Yes. Olive shaped है, बिल्कुल ठीक है मोनिका. How the patient will present to you, let us just discuss that. Yes. So the clinical features, basically the patient, or if I just talk about the child, the patient or the child will be normal at birth. Okay, birth pain, there will be no problem. It is normal at birth. Okay, it is normal at birth. It clearly means that there is no vomiting. अगर खाना आगे पास नहीं हो रहा है तो obviously vomiting is one of the symptoms that will encounter first, but actually it is normal at birth. It is no vomiting at birth. Obviously बात है, ठीक है, it is normal at birth. Now no vomiting at birth helps us in differentiating between two conditions. Helps us in differentiating between, we have two conditions. So congenital hypertrophic pyloric stenosis and duodenal atresia. I will discuss this in duodenal atresia also guys, right? When I will discuss the development of the duodenum tomorrow. So in duodenal atresia beta, vomiting is present since birth. The vomiting is since birth, and the vomiting will contain bile, the contents of the bile. So it is also called as the bilious vomiting. So there will be two clinical cases guys. The examiner will not try to confuse you. He will give that a child is
Normal at birth, there is no vomiting at birth, but the symptom starts after 2 to 3 weeks. The symptoms start after 2 to 3 weeks, and that is the hint of the question, guys. That is the hint of the question that you have to come to the diagnosis. Agar vomiting birth ke time par hi present hai, after soon after the birth the vomiting is there, it is duodenal atresia. If the vomiting is after 2 to 3 weeks, right, if the symptom starts after 2 to 3 weeks, okay, and this vomiting will be a projectile vomiting. Okay, this vomiting will be a projectile. Projectile पढ़ा है ना, वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये प्रोजेक्टाइल होता है, तो वॉमिटिंग इस तरीके से होती है, राइट? वॉमिटिंग इज लाइक दिस. And the second most point, it is non-bilious. It does not contain any biliary content, any bile. So it is non-bilious vomiting. Okay. And usually in many of the child, like we have seen that there is no protein energy malnutrition, right? So I hope you are able to differentiate between these two conditions when they will be asked in the surgery in the exam, how, like, what is the diagnosis, guys, right? So if the vomiting and the bilious wala part, these 2 points are important to differentiate. वैसे तो इसी से डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है, इफ यू जस्ट रीड द फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ द क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेटरी चॉइसेस भी देते हैं कभी कभार ऑप्शन में. लास्ट टाइम एफएमजी क्वेश्चंस भी था ये, ठीक है, where the question was very simple. They have given a case and they have shown this x-ray also, where they was given a case and they have shown this x-ray as well. So now coming on to, we have discussed the clinical feature, right? We have discussed the clinical feature. Now coming on to the diagnosis. So we have discussed the clinical feature. Now coming on to the diagnosis wala part, right? Diagnosis. I hope the short symbols that I'm using for diagnosis is clear. Now, diagnosis, what you will do, okay? You will do an ultrasound of the abdomen. Ultrasound of the abdomen. And here you will see, I'll just write it down, hypertrophied pylorus. USG beta basically means ultrasound, and ultrasound of the abdomen, where you will see the hypertrophied pylorus. Okay. Now, when we say hypertrophied pylorus, beta, it simply means that the thickness, it is also asked in the question, the thickness of pyloric musculature it is more than 4 millimeters. The thickness of the pyloric musculature, it is more than 4 millimeters. And remember the length, okay, of pyloric musculature. It is more than 16 millimeter. It is more than 16 millimeter. It is more than 16 millimeter. That is the confirmatory diagnosis, beta. If you see the thickness on the ultrasound and the length, the thickness more than 4 and the length of the pyloric musculature more than 16 millimeter on ultrasound, that is a confirmatory diagnosis. And this ultrasound abdomen, mark it, this has also been asked in the exam, that is the investigation of choice. Okay, in a patient who after 2 to 3 weeks have projectile vomiting with non-bilious contents, right? We actually do the ultrasound abdomen, and in the ultrasound abdomen we see these particular things, right? These are the findings in the ultrasound which are suggestive for this congenital hypertrophic pyloric stenosis. Now this x-ray, coming on to the x-ray, we also do an x-ray. So that is again okay, so let me use the red pen so that it's like way visible. So basically this is an x-ray abdomen, guys, right? X-ray abdomen, and you can see that a bubble is formed, right?
a bubble is formed. A single bubble will appear in the stomach. Okay, a single bubble will appear in the stomach. So this single bubble sign, remember it is suggestive of congenital hypertrophic pyloric stenosis. Okay, congenital hypertrophic pyloric stenosis. Yes, guys. So I hope this is clear to everyone, right? So just give me a thumbs up, guys, that the diagnosis part is clear. The confirmatory, the investigation of choice still remains the ultrasound. X-ray is done, and on the X-ray, you can see a single bubble sign, and that is again suggestive of this particular condition. So yes, Aditya, Garima, Veer Doshi, Tanupriya, very good. Very good. Now we have to understand some metabolic pathology that is being resulting over here. Yes. So now guys, what happens? Because of gastric outlet obstruction. Now because of gastric outlet obstruction, for example, let us now just try to understand this. Now, if this part is obstructed, guys, pylorus part is obstructed, what will happen? We already know we have HCl in the stomach. Along with the food contents, the HCl will move out through the mouth along with the vomiting. So this HCl will come out, right, in the form of H plus and Cl minus ions. So that is something which is referred to as the typical metabolic abnormality. Metabolic abnormality. Now, if H plus is decreasing, okay, in the patient's body, okay, and the Cl minus, okay, so what will happen, guys? Metabolic alkalosis has occurred. एसिड कम हो रहा है ना बेटा, तो एसिड कम होगा तो ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलेंगे? एल्कलोसिस. यस मोनिका, वेरी गुड. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कलोसिस. सो रिमेंबर गाइस दैट द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हैज अकर्ड. Metabolic alkalosis has occurred, and what will happen? Due to this, the renal compensation will start. The renal compensation will start. Now, what does renal do to make the balance? It also starts secreting or excreting HCO minus 3, okay, the bicarbonate ions in urine, and sodium plus also goes along with that. Sodium plus also goes along with that. Yes. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला था मोनिका. फन मोड, यस बेटा. हाँ, recurrent vomiting is one of the cause, right? So after some time, beta, what will happen? After some time, huh, after some time, what will happen? There will be hyponatremia in body, right? There will be hyponatremia. Natremia का मतलब है क्योंकि सोडियम आयंस कंपनसेट करने के लिए इट इज गोइंग बाहर, इट इज गोइंग आउटसाइड, तो हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा. There will be hyponatremia in the body. You already know the renin angiotensin system. Kidney में आप लोग पढ़ेंगे renin angiotensin system. So this will get stimulated. This will get stimulated. Okay. And aldosterone will be released. Aldosterone will be released. Yes. RASP. Okay. Now, guys, tell me, what is the function of aldosterone? For example, if I'm drawing the collecting duct over here. Now, suppose this is the collecting duct.
What is the function of the aldosterone, guys? What is the function of the aldosterone? एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा कि Na+ जो बाहर निकल रहा था, इट विल ट्राई टू टेक reabsorption of sodium ions back into the body. Collecting duct is the part of the nephron, right? So it actively takes, so it, yes, reabsorption actively takes Na+ in connecting duct, Na+ in collecting duct, okay. एंड अगर Na+ अंदर आ रहा है तो बाहर क्या जाएगा बेटा? वी हैव H+ एंड K+, H+, और अगर इसमें से भी पूछा जाए द वेरी फर्स्ट वन टू गो आउट, इट इज K+. सो येट, so the body develops hypokalemia, the body develops hypokalemia, okay, and it also is secreting H+. So remember that H+ ions in urine, they are suggestive of paradoxical aciduria. Aciduria. So remember, because of this gastric outlet obstruction, we have metabolic alkalosis with paradoxical aciduria, or you already know, body will develop or show symptoms of hypokalemia. So I hope this particular part is you have understood, guys. Just give me a thumbs up if this particular part is understood to everyone, so that I'll start with the management part of this particular topic. Anushka, Monica, गरिमा says please explain again. देखो गरिमा क्या होता है कि अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज स्टमक से क्या जाएगा, HCl बाहर जाएगा थ्रू माउथ, तो बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से, एज वन ऑफ स्टूडेंट्स वेरी राइटली सेड, फन मोड, whosoever you are, so what will, there will be a typical metabolic abnormality in the body. H+ भी कम हो गया, Cl- भी कम हो गया, अगर एसिड वाला कंटेंट कम हो गया बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एल्कोलोसिस हो जाएगा. अब एल्कोलोसिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो किडनीज ट्राई टू कंपेंसेट, किडनीज क्या करती है, बिल्कुल मैच करने की कोशिश करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो बाइकार्बोनेट आयंस यूरिन में सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी, और बाइकार्बोनेट्स के साथ साथ Na+ भी सिक्रीट होने लगता है ताकि कंपेंसेट हो सके जो लॉस हुआ है. बट आफ्टर सम टाइम अगर Na+ बॉडी से बाहर जा रहा है वाया यूरिन, अब तो मुझे खुद बताओ कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा बॉडी में, और हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है विच इन विच आवर बॉडी कैन नॉट लाइक रेसिस्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, तो ये स्टिमुलेट हो जाता है, एक्चुअली फिजियोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है. तो इसकी वजह से एक एंजाइम, ओके, दैट इज एल्डोस्टेरॉन, ओके, इट विल एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन. एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, सोडियम को वापस रीएब्सॉर्ब करना. तो वो सोडियम जो बॉडी से लॉस हो रहा था, इट विल ट्राई टू रीएब्सॉर्ब दैट बैक. अब सोडियम एब्सॉर्ब करेगा, तो उसके अपोजिट में आपको पता है, अगर सोडियम अंदर आ रहा है तो बाहर क्या जाएगा, पोटेशियम. नॉर्मल थ्योरी है, राइट. तो पोटेशियम बाहर जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया, बॉडी विल डेवलप हाइपोकेलेमिया. और पोटेशियम के साथ साथ व्हाट इज गोइंग आउट, इट इज H+, राइट. सो H+ आयंस इन यूरिन, इट इज सजेस्टिव ऑफ एसिड, ठीक है. H+ अगर पानी में मिला दोगे तो H+ इज लाइक एसिड ना, तो पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, ये नॉर्मली नहीं हो रहा है, ये कंपेंसेटरी हो रहा है, ठीक है. So yes, it is metabolic alkalosis with paradoxical aciduria. I hope this is clear to everyone now. Sure.
Yes, sir. Clear. Okay, Karima. Perfect. Perfect, beta. So, right, guys, on examination बेटा OE stands for on examination. अभी मैं लिख रहा हूँ complete, बाद में आप लोग को पता होना चाहिए. In my future lectures I won't write it complete. On examination, okay. Now firstly you should know what is the best time to examine. Best time to examine the patient, it is when the child is feeding. When the child is feeding, right? Now, when the child is feeding, you will see a visible peristalsis. Okay, peristalsis will be visible. Okay, and the peristalsis will be going from the left side to the right side, right? It will be going from left to right, right, in the body. So, yes, Monica, right? Right, Monica. So, again, Monica has already told one point that I will write right now because on examination only you will get it. Palpable olive, olive shaped swelling. Now, palpable olive shaped swelling. It is seen in epigastrium. Okay, it is in epigastrium you will find when you will palpate or the epigastric part, you will find the swelling over there, and that is epigastric swelling. Okay, so that is the olive shaped swelling that you will encounter in the epigastrium part. Okay, and after the feeding you will encounter that it is followed by, or during the feeding it will be followed by projectile vomiting. Projectile vomiting. So these are some like on examination what you will encounter. And lastly comes the most important part, that is the management. MX लिखूंगा, बाद में आपको पता होना चाहिए I'm talking about the management part. Now what you will do with this patient, guys? What is the first step that you will do? Now use your brains, guys. I want to know as a doctor how much your brains are working. So tell me what you will do with this particular case. What is the first step in this management? This is again a question that has been asked. What is the first step in this management? Sure. No one? बेटा अब एक बात बताओ, अगर बॉडी में फूड जा ही नहीं रहा है तो सबसे पहले तो फीडिंग और डिहाइड्रेशन करेक्ट करोगे ना बॉडी का. विटामिन थोड़ी स्टार्टिंग में दे देंगे बेटा. इट्स फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द पेशेंट. इट इज वेरी एसेंशियल बेटा. व्हेनेवर you see that there is loss of fluid from the body, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, तो सबसे पहले फ्लूइड करेक्शन बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट स्टेप, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, पहले आपसे ये पूछ लेंगे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, तो तुम लास्ट में लिखोगे सर्जरी करेंगे. अरे सर्जरी थोड़ी कर दोगे स्टार्टिंग में, पहले बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस तो चेक करोगे. मेटाबॉलिक करेक्शन और बॉडी इट इज रिक्वायर्ड. So first we will do, or first we'll correct the dehydration part. First we will correct the dehydration and metabolic abnormality, क्योंकि पोटेशियम लेवल्स कम होने लग जाएंगे तो सीजर्स आने लग जाएंगे पेशेंट. तो metabolic abnormality is corrected. Now what, how will you correct dehydration? That is again a question. तो ये पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए. डॉलर लगा लो. व्हाट इज द बेस्ट फ्लूइड दैट यू कैन गिव टू द पेशेंट? इट इज 0.45% normal saline, normal saline plus dextrose, okay, plus dextrose plus KCl. शुगर भी दोगे
normal saline plus dextrose plus KCl. Again, KCl के बारे में just remember one thing, that it is only added when renal function recovers. Okay, the renal function recovers. Kidney function test, renal function recovers. Otherwise तुम KCl डालते जाओगे और किडनी से बाहर जाता जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा KCl डालने का. It is only added when the renal function recovers. Yes, dextrose plus normal saline, yeah, and that is 0.45% plus KCl. Or if this is not given in the question, then you can go with Ringer lactate solution. Ringer lactate, right? Ringer lactate. Okay. Now, second step that you will do, it is the surgery. Surgery. When the fluid levels are corrected, then you will move on to the surgical part. Okay. Now, surgery is called as Ramstead pyloromyotomy. Pyloromyotomy. Ramstead pyloromyotomy. It's the name of the surgery. पाइलोरो का मतलब क्या होता है बेटा? पाइलोरस पार्ट. मायोटॉमी मतलब उसकी मसल्स. मायो मीन्स मसल्स और टॉमी मीन्स कट. तो सिंपली आप लोगों को पता है कि यू हैव टू कट द पाइलोरिक मसल्स और फिर उसको रिपेयर कर देना है. ठीक है, रिपेयर कर देना है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक एन ल्यूमन. ओके, और पाइलोरिक मसल्स जो एक्स्ट्रा है उनको सारी काट के रिमूव कर दो. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, अब यहाँ पे जो सेरोसा होगी, यू हैव टू कट द सेरोसा. यू हैव टू कट द सेरोसा. ओके, देन यू हैव टू रीच द मसल. ओके, then you have to split the muscle, reach the muscle and make a split. Okay, so reach muscle and make split, and then you have to like cut, right? Now there can be two situations, guys. There can be two situations over here. If the underlying mucosa accidentally during the surgery gets injured, okay, mucosa gets injured, then you have to wait. You have to repair the mucosa first. You have to repair it first. Okay, and then we have to wait for 24 to 48 hours for feeding. But in one situation, when the mucosa is not injured, then you don't wait for 24 to 48 hours. It's like 4 to 6 hours. After 4 to 6 hours, we can start feeding. Start feeding. Okay. So the name of the surgery, yeah. So I hope this particular surgical portion that I've discussed in almost 3 slides, only 3 to 4 slides, which I've discussed along with the metabolic abnormality. So I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone, guys. Just give me a thumbs up that this is clear to each one of you. So I will be starting with the development of the pancreas now. This again a very important topic, guys. Again very important topics. बहुत सारे क्वेश्चन कंजेनाइटल क्वेश्चन इससे आते हैं, बट पहले इसका डेवलपमेंट समझोगे तो कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. फिर उसके बाद एनाटॉमी इतनी इजी हो जाती है ना कि तुम लोग खुद ही बताने लग जाओगे मुझे. ब्लड सप्लाई क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, मेन ब्लड सप्लाई सीलियक ट्रंक से आएगा. ठीक है, सीलियक ट्रंक कहाँ से आ रही है? एब्डोमिनल आयोटा, थोरासिक आयोटा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब आयोटा जो निकलती है. ठीक है, तो यस, करिमा, आदित्य, कपिल, फनमोट, तनु, अनुष्का, वीर, डिंपल, वेरी गुड गाइस. रिप्लाई करते रहा करो सो दैट आई हैव एन आइडिया दैट आई एम नॉट टीचिंग वॉल्स, आई एम टीचिंग यू पीपल. सो या, देखो, डेवलपमेंट ऑफ द पेनक्रियास. So you guys are very well aware. So if I just okay, इसी डायग्राम को अभी हम लोग दोबारा देखते हैं. देखो, we already know that this is the tube
the gut tube, right? This is the gut tube, and this gut tube is divided into the foregut, midgut, and hindgut. I will be starting with the anatomy portion after like 1 day. And guys, believe me, this is an important topic in class. Anatomy of abdomen is like for 3 weeks. Like in foreign where I was teaching, it was for 3 to 4 weeks. So yes, this is an important topic that I will be discussing. So yes, now just come to the topic. So you already know that this is the foregut, right? This is the midgut and this is the hindgut. So we are just talking about the foregut. So you already know that this is the gut tube, and this gut tube, it is endodermal in origin. Endodermal in origin, right? Now, this is in the picture. See, this is the anterior abdominal wall and this is the posterior abdominal wall, right? This is the anterior abdominal wall and this is the posterior abdominal wall. So I'm just trying to draw it, and we'll just see how the, so yes, this is the anterior abdominal wall and this is the posterior abdominal wall. So this is posterior abdominal wall, anterior abdominal wall. आगे वाला हिस्सा हो गया. आगे की तरफ you are very well aware कि आगे we have this what we say umbilicus होता है, नाभि होती है, ठीक है. So you already know that this is the foregut, okay, right? And so let us assume till here we have the foregut. ऊपर वाला क्या है, foregut है, और नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगी, midgut. Okay, so part of the duodenum, it is basically developing from the foregut also, okay, and rest part it is developed from the midgut, right? So now at the caudal portion, guys, what will you see over here, that there are development of two buds, okay, there are development of two buds, guys, right? Okay, so we have the dorsal pancreatic bud, okay, a little bit what I will say cephalic, right, a little bit above, and below that, okay, towards the anterior abdominal wall, we have the development of the ventral pancreatic bud. Ventral pancreatic bud. Yes, Monica, right? And towards the dorsal part, we have the dorsal. पीछे की तरफ हो गया तो dorsal. Dorsal मतलब posterior. Dorsal pancreatic bud. Pancreatic bud. So in simple statement, आप लोग को अगर एक ट्यूब दिखाई जाए, okay? So now suppose this is the foregut, right? So we have a ventral pancreatic bud, and okay, a little above we have the dorsal pancreatic bud. Like this it is going, right? ये anterior side पे है और ये posterior side पे है, ठीक है? तो जो आगे की तरफ है sagittal section में आप देख रहे हो, जो आगे की तरफ है that is the anterior, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, posterior. क्या इतना क्लियर है सब लोगों को? ओके, इतना क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, इसको अगर एक तरीके से और देखना चाहते हो तो you already know we have the loop of the duodenum. Okay, we have the loop of the duodenum, right? We have the loop of the duodenum. और आप लोगों को पता है कि ड्यूडेनम के बाहों में क्या है, पेनक्रियास है. ड्यूडेनम के बाहों में क्या है, पेनक्रियास है. So I mean, yeah, I'll just show the opposite way, right? So it's
सो इसको हम लोग रोमांस ऑफ ड्यूटनम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, मतलब इसको वैसे हम लोग रोमांस ऑफ ड्यूटनम भी बोलते हैं। सो यू ऑलरेडी नो कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटनम है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड, ओके। और क्योंकि ड्यूटनम देखो आगे अम्बिलिकस तक जा रहा है, तो ये सब अब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको बेटा यहाँ पे दिखाई देगा बाइल, या वी हैव अ प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट, ओके। अब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि दिस प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट विल गिव राइज टू, देखो ये फोरगट का ही पार्ट है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिड कट राइट नाउ, मिड कट नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है दैट दिस प्रॉक्सिमल, ओके, दिस बाइल डक्ट विल गिव राइज टू द टू लोब्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड। और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, डॉर्सल। तो ये बिल्कुल कॉर्डल एंड पे देखने को मिलता है, बिल्कुल कॉर्डल एंड पे देखने को मिलता है। ये इतना क्लियर है सब लोगों को? नाउ गाइस, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलो, चलो वेरी गुड। एक थम्स अप दे दिया करो बीच बीच में, सो दैट आई एम नॉट टीचिंग द वॉल्स, राइट। चलो, तो अब इसमें हम लोग क्या कराते हैं, रोटेशन कराते हैं, ठीक है। वी विल डू अ रोटेशन, ओके। नाउ आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, after 90-degree rotation, okay. Now when I say 90-degree rotation guys, you already know that ये वाला सीन है कुछ, okay। So we have this dorsal pancreatic bud and we have this ventral pancreatic bud, ये जो bilobe structure होता है। Now what it will do, right? Now so you already know कि अब ये जो आगे की तरफ है गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, सेजाइटल सेक्शन था ना ये। अब ये सेजाइटल सेक्शन था बेटा, तो यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेंट्रल वाला पार्ट था ये आगे था और डॉर्सल पीछे की तरफ था। अब 90 डिग्री रोटेशन होगा, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि वेंट्रल वाला पार्ट है वो किस साइड आ जाएगा। अगर इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो उस साइड क्या है और इस साइड क्या है, तो उस साइड जल्दी से बताओ। इसको डायमेंशनली समझने की कोशिश करना। अगर ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है, ठीक है, अगर ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है, अगर 90 डिग्री रोटेशन होगा तो ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। और डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड जो है, ओके, पीछे वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। आगे वाला इट विल कम ऑन द राइट साइड और डॉर्सल वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, यस, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो नॉर्मल 90 डिग्री रोटेशन के बाद आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई देगी, ओके। तो अब ये 2D में तो मैं आई कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस ओनली, ओके। तो यस, यू गाइस विल हैव, ये चला जाएगा राइट साइड पे, 90 डिग्री होगा ना, तो ये 90 डिग्री और ये पीछे की तरफ आ जाएगा। सो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, आई मीन लेफ्ट साइड पे। तो दिस विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, हाँ, दिस विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। तो अब नाम इनका यही है, वी हैव द वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड,
which will be on the right side now, and we have the dorsal pancreatic butt, जो कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे, dorsal pancreatic butt, right? I hope इतना क्लियर है सब लोगों को. अब उसके बाद वेंट्रल पेनक्रियाटिक बट, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द वेंट्रल. अब वेंट्रल वाले को देखो लेफ्ट साइड पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लेफ्ट साइड पे ही क्या है, किडनी है. सॉरी, किडनी कह रहा हूँ. यू हैव द डॉर्सल पेनक्रियाटिक बट. तो नॉर्मली जो पेनक्रियास का अलाइनमेंट होता है वो कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे ही है. तो वेंट्रल वाले को इट हैज टू गो टू लेफ्ट साइड, इट हैज टू गो टू लेफ्ट साइड. तो अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला ड्यूडनम वाला पार्ट है. ठीक है, ये ड्यूडनम वाला पार्ट है. सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द ड्यूडनम वाला पार्ट. नाउ द वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट बट will have 180 degree rotation. Okay, it will rotate 180 degree now. ठीक है, to reach the dorsal pancreatic butt. So we have the ventral pancreatic butt rotation towards the left side. Okay, और ये जो बीच में ये बाइलोब स्ट्रक्चर है ना, ये भी फ्यूज हो जाता है गाइस. ठीक है, लेटर ऑन व्हेन इट जॉइंस टू द डॉर्सल पेनक्रियाटिक बट इट गेट्स फ्यूज्ड. ओके, सो टोटल अगर रोटेशन की बात करो, फटाफट बताओ टोटल रोटेशन कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हमने रोटेट कराया, जल्दी बताओ. टोटल रोटेशन इज हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन? इन द चैट बॉक्स गाइस, इन द चैट बॉक्स गाइस. मोनिका सेज 270. बाकी भी बता दो जल्दी से. 270 और किस डायरेक्शन में हुआ है बेटा? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? Now what will happen guys, now this is something that you have to like learn over here. So this is the loop of the duodenum. Okay, I'll draw this. Yes, 270 degree. Yes guys. Okay. क्लॉकवाइज होगा ना प्रशांत, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना. देखो पहले आगे था, ठीक है, इट वॉज इन फ्रंट. ठीक है, तो वो राइट साइड पे जा रहा है 90 डिग्री. ठीक है, तो जो आगे वेंट्रल जो बट था वो राइट साइड पर आ गया, और जो पीछे वाला जो बट था वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे. ठीक है, 90 डिग्री में तो पूरा रोटेट करेगा. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये वेंट्रल बट्स यहाँ आ गए तो अगेन दे हैव टू गो क्लॉकवाइज 90 डिग्री. तो पीछे आएगा पहले, फिर 90 डिग्री जाएगा, तब वो डॉर्सल वाले के साथ फ्यूज करेगा, राइट. तो टोटल 90 90 180 हो गया ना, तो 180 पूरा घूम गया. ठीक है, सो यस. I would ask the technical team to block this Anis gaming. I don't know why he's asking me mutation over here. Anyways, so I'll draw this diagram over here. चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में बना के समझ लेते हैं कि अब एक्चुअल सिचुएशन क्या आ रही है. पूरा रोटेशन 270 डिग्री जो रोटेशन हुआ है, उसके बाद यू गाइस विल सी. और ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. So you can see this particular diagram guys, right? This is very very important, right? Now what happens guys, you can see over here that we have the dorsal pancreatic butt. Okay, I'll just draw it with another color so that it's yeah, I'm just drawing it with another color guys, right? So basically this is the dorsal pancreatic butt. Dorsal pancreatic butt, right? And below it we have this. Okay, I'll just use a green color for that. So below this we have this ventral pancreatic butt. Okay, we have this ventral pancreatic butt.
Now, guys, there. Okay, can anyone tell me what are the parts of the pancreas? Anyone who would like to answer me? What are the parts of the pancreas? नॉर्मल पेनक्रियास के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? Hmm. Uncinate process. Yes. Good day, Rishi. Okay. Yes. नहीं नहीं बेटा, वो slowly and slowly it just migrates over there. No बेटा, not midgut. Not. बेटा याद रखना, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम होता है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम द फोरकट. तो अगर प्रशांत तुम्हें ये लग रहा है, हाँ ठीक है, हेड बॉडी टेल अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है. अगर प्रशांत तुम्हें ये लग रहा है कि ड्यूडनम सिर्फ मिडकट से बना है, इट्स रॉन्ग. ड्यूडनम इज डिराइव फ्रॉम बोथ फोरकट एंड मिडकट. जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है बेटा, ओके, of the duodenum, it is derived from the foregut. तो ये मैं वो वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, where you will encounter this particular pancreas. तो अगर ये तुम्हें उसके साथ दिख रहा है, क्या कहते हैं, duodenum के साथ दिख रहा है, तो this duodenum is basically derived from the foregut only. तो ये अभी हम foregut वाले में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. Okay, so now dorsal pancreatic bud. So these are again important MCQ embryology questions that you have to like keep in mind. The dorsal pancreatic bud will give rise to the upper head. Okay, it will give rise to the upper head. Okay, it will give rise to the neck of the pancreas. Okay, it will give rise to the body and tail of pancreas. Tail of pancreas. Okay, and the ventral pancreatic bud will differentiate into the lower head of the pancreas, lower head of the pancreas, and uncinate process. When I will discuss the anatomy of pancreas, so I will ask you that from where which part is coming, right? So you should know. These are again important MCQ questions that you have to like keep in mind. So yes, these are again MCQ questions that you have to keep in mind. Okay, so I hope this particular picture is clear. Now, in the dorsal pancreatic duct, guys, remember the dorsal pancreatic duct, basically a duct will develop, okay, a duct will develop, and it is called as the dorsal pancreatic duct. Okay, so there will be a duct which will be developing in the dorsal pancreas, and this is called as the dorsal pancreatic duct. ये पूरा अब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, पूरा हम लोग लेफ्ट साइड पे पढ़ रहे हैं, राइट, और ये राइट साइड हो गई. तो राइट साइड से जो वेंट्रल वाले थे वो माइग्रेट करके गए, और डॉर्सल वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, सिफेलिक होता है, और वेंट्रल थोड़ा सा नीचे होता है, सो दैट इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोर्शन. वो 180 डिग्री दोबारा रोटेट किया द वेंट्रल वन एंड इट लाइक रिजल्टेड इन दिस पिक्चर. So we have the dorsal pancreatic duct, a duct will develop. Okay, that is called as the dorsal pancreatic duct. And below, another duct will develop. And that is called as the ventral pancreatic duct. Ventral pancreatic duct. Ventral pancreatic duct. Yes, ventral pancreatic duct. So I hope this particular picture is clear right now. We have two ducts right now. We have the dorsal pancreatic duct and we have the ventral pancreatic duct. Okay. So I hope this picture is clear to everyone. Yes. चलो अब इसमें देखते हैं what will happen over the time. Okay, over the developmental time, what will happen? Yes, Krisma, very good, very good. What will happen? Yeah. What will happen? There will be connection of Aditya, very good, guys. Over the time, what will happen? There will be connection of the ventral pancreatic duct
to the dorsal pancreatic duct. Okay, there will be an oblique connection, guys. This is actually an oblique connection, which I'm just drawing right now. There will be an oblique connection between the ventral pancreatic duct and the dorsal pancreatic duct. Oblique connection, or I can say oblique communication, okay, between the ventral pancreatic duct and the dorsal pancreatic duct. एक oblique connection बनता है, ठीक है? Now, guys, Monica, you are very much right. So now we already know that the pancreas has two ducts, right? फटाफट से उन दोनों डक्ट्स के नाम बता दो चैट बॉक्स में. तो पेनक्रियास हैज टू डक्ट्स, गाइस. टेल मी द नेम ऑफ दीस टू डक्ट्स, एवरीवन. What are the name of these two ducts? The major duct of the pancreas and the minor duct of the pancreas. Yes. Wilson. Yes, and Centroni. Very good. The major one, the major duct, it is the duct of Wilson. Okay. And the minor duct or the accessory duct, it is duct of Centroni. It is duct of Centroni. तो ये सारे पार्ट्स मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं. इसी पेज पे सब कुछ क्लियर हो गया. सारे पार्ट्स पेनक्रियास के, इट इज ऑलमोस्ट क्लियर, राइट? सो यस कपिल, वेरी गुड, वेरी गुड. माइनर ये हो गया, ठीक है. माइनर एक्सेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियास. नाउ गाइस, हाउ दिस डक्ट ऑफ विल्सन इज फॉर्म्ड? हाउ दिस डक्ट ऑफ विल्सन इज फॉर्म्ड? Just look at this connection right now. Just look at this connection, guys. So the proximal ventral pancreatic duct, I mean this whole ventral pancreatic duct, okay, along with this oblique connection, guys, and distal part of the dorsal pancreatic duct, it will form the major duct of the pancreas, and it is the duct of Wilson, and it will open into the second duodenal, or sorry, it will open into the duodenal papilla. Okay, it will open into the second part over here. It is the duodenal papilla. Okay, duodenal papilla. ऊपर से कंट्रीब्यूशन वहां से भी आता है, ठीक है. Yes, duodenal papilla. Okay. नीचे होगा बेटा Wilson. Wilson duct will be down. अब duct of Wilson किस किस से बना हुआ है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले. चलो मैं I'll just write it for you people. So you should know that it is formed from the proximal part of VPD. VPD बेसिकली बेटा क्या है? वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट प्लस ऑब्लिक कनेक्शन और ऑब्लिक कम्युनिकेशन प्लस डॉर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट का कौन सा पार्ट है? पीछे वाला पार्ट है. तो पीछे मतलब डिस्टल हो गया. सो आई कैन सिंपली से द डिस्टल पार्ट ऑफ डॉर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट, DPD. DPD क्या है? डॉर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट, राइट? और ये नीचे ओपन होगा, ठीक है, ड्यूडनल पैपिले पे, राइट? मेजर ड्यूडनल पैपिला. मेजर ड्यूडनल पैपिला बोलते हैं इसको, राइट? इट विल ओपन डाउन, दैट इज द मेजर ड्यूडनल पैपिला, राइट? अब दिमाग लगाओ और ये बताओ क्या बचा हुआ है. व्हाट इज लेफ्ट गाइस? व्हाट इज लेफ्ट राइट नाउ? Now guys, can you see the proximal part of the dorsal pancreatic duct? अब ये भी ओपन होगा, ठीक है, ये भी ओपन होगा, ठीक है, into the duodenum only, just 1 point like it's 2 or 2.5 centimeters just above this major duodenal papillae, इसके ऊपर. So that is the minor duct, or we call it as accessory. Accessory का मतलब होता है एक्स्ट्रा हो गया ना. So it is called as the minor duct
or duct of Centroni. Okay, duct of Centroni, or it is the accessory duct of the pancreas. Accessory duct, or ये just ऊपर distance is like 2 to 2.5 centimeters between these both ducts. I hope this is clear to everyone now. I hope this is clear to everyone now. फटाफट से एक thumbs up दे दो that this particular picture is clear to everyone. Tanupriya says yes, it's clear to her. Monica, okay. बाकी सब भी reply कर दिया करो. So that I have an idea that you guys are participating, not showing, not sleeping in the class, right? Okay, perfect, perfect guys. Yes, clear, clear, clear. तो इतना ही जानना था. देखो पेनक्रियास वाले में पूरा डेवलपमेंट और रोटेशन और पार्ट्स सारे के सारे बता दिए हैं तुम्हें. ठीक है. नाउ वी हैव द मोस्ट कॉमन एनोमली ऑफ द पेनक्रियास, दैट इज पेनक्रियाटिक डिविजन. नाउ देयर इज अ कंडीशन गाइस, अगर रोटेशन नहीं हुई, अगर गाइस वेंट्रल वाला जो पार्ट है, ओके, वेंट्रल वाला जो पार्ट है, इफ इट डजंट रोटेट्स, अगर ये रोटेशन होगी ही नहीं, जो नेक्स्ट 180 डिग्री रोटेशन होनी थी, अगर इफ दिस रोटेशन डजंट टेक प्लेस, what will happen, there will be failure of fusion of ventral and dorsal pancreatic duct. अगर रोटेशन ही प्रेजेंट नहीं है तो there will be resulting in something which is called as pancreatic division. बेटा नेम से ही पता चल रहा है. So it is pancreatic division. So remember that it is the most common, it is the most common congenital anomaly of the pancreas. It is the most common congenital anomaly of the pancreas. Okay, it is the most common congenital anomaly of the pancreas, right? It results from, or it is, what is the cause guys? It is the failure, जिसको अब एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी जो ये रोटेशन समझ में आया वही इसी उसी को ये क्लियर होगा. इट इज फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ dorsal and ventral pancreatic buds. Ventral pancreatic buds. Okay. Now remember, what will happen? Basically, the patient is asymptomatic. Asymptomatic. And even if I'm just not talking about the buds also, the ducts also, the ventral pancreatic duct and the dorsal pancreatic duct will open independently into the duodenum. So ultimately, there is nothing as such problem, right? So patient is usually asymptomatic, and most of the time there is no management which is required for these patients. Okay, most of the time there are no management which is required for this patient. If like you have to do a diagnosis, diagnosis of this condition is done by MRCP or it is done by ERCP. Now when I say MRCP, it simply indicates it is magnetic resonance. These questions have been asked, that's why I'm just discussing it. Resonance pancreatography, pancreaticography, pancreatic, okay. And ERP, basically ERCP stands for endoscopic retrograde okay. Again the same,
Cholangiopancreatography, basically you already know the cholangio, the accessory bile ducts, okay, the accessory hepatic biliary apparatus. So yes, it's for that. So yes, again a problem can be arise that pancreas can be inflamed. It increases the risk of no pancreatitis. So if there is pancreatitis, guys, you have to do an sphincterectomy. Okay, you have to just cut it and remove it. Now, annular pancreas. Now, when I say annular pancreas, guys, now पहले इस condition को समझो, guys. Annular pancreas. Now, annular का मतलब होता है circle. Annular का मतलब होता है circle, right? Now, when I say annular pancreas, now you already know that this is the loop of the duodenum. This is the loop of the duodenum, and this is the dorsal pancreatic bud. This is the dorsal pancreatic bud, and we have the ventral pancreatic bud, which are two in number. We have the ventral pancreatic bud, ventral. Monica, you are right. Ventral pancreatic bud. So remember, guys, that this ventral pancreatic bud, one of the bud will go in clockwise direction, okay, and one bud will come in anti-clockwise direction. Now, guys, what will happen around the duodenum? Duodenum के आसपास क्या हो जाएगा? Duodenum will be surrounded by this ventral pancreatic buds from all the sides. एक बड आगे आ जाएगा और एक बड पीछे चला जाएगा. So it is covering the duodenum from all the sides. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Annular. Annular का मतलब क्या होता है? Circle. Rotation. तो obviously बात है, if one of the pancreatic duct is going from like behind, one is coming from the front like this, okay, both rotating in opposite directions, it is actually rotating around the duodenum and it is trying to compress the duodenum. So it can result in duodenal stenosis as well. Okay. So remember that annular pancreas, annular pancreas. So it is the mal rotation. It is the mal rotation of the ventral pancreatic duct. Ventral pancreatic duct. Okay. Now, due to this, what happens? There is encasement of duodenum. Duodenum is surrounded by this ventral pancreatic duct. There is encasement of duodenum. बिल्कुल रिंग जैसा, पूरे गले पे जैसे फांसी का फंदा बना दिया हो, बिल्कुल वैसा हो जाता है. Okay, and usually it involves the second part of the duodenum because later on, I've already told you proximal part is actually developing from this foregut only, right? So it usually involves the second part of the duodenum. Second part of the duodenum. Okay, and if there is encasement, guys, it can lead to duodenal stenosis. It can lead to duodenal stenosis, and or I can say stenosis का मतलब क्या हो गया? Duodenal obstruction. Duodenal obstruction. Now, clinical feature over here, guys, you will see projectile vomiting. Projectile vomiting. Okay, and non-bilious. Non-bilious followed by means bilious vomiting. Bilious vomiting कहने का मतलब है non-bilious is most common than the bilious part. ठीक है, because you already know the biliary tract is also opening over here, so it can be bilious vomiting as well. On X-ray, guys, on X-ray, again the clinical features are remaining the same. So how to differentiate? On X-ray, you will get a double bubble sign.
दो बबल्स दिखाई देंगे एक्सरे पे. You will have a double bubble sign. I'm not included this picture. Just after the class, go to the Google and just see the double bubble sign. The diagnosis, वहां पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करा रहे थे बेटा. Over here we will do the investigation of choice. It is CECT. Okay, it is CECT. It is contrast enhanced computerized tomography. CT स्कैन कराते, but it is contrast enhanced. हम लोग contrast डाल के कराते हैं, ठीक है. Contrast enhanced computerized tomography. And at last, the management, guys, very important. The management has been asked in the paper multiple number of times. We do duodenoscopy, duodenoscopy, followed by duodenojejunectomy. हम लोग क्या करते हैं बेटा, टॉमिंग का मतलब क्या होता है, कट. तो वी विल कट दैट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम विच इज सराउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर पेनक्रियास, और ऊपर का ड्यूडेनम, the proximal and the distal duodenum are joined together, right? Either we do like this or we cut this part and that part of the duodenum will be joined to the jejunum. Okay. The procedure that we follow, it is duodenostomy, the most common one, right? Rarely we do duodenojejunectomy, right? So that is something that we have to remember कि वो वाला पार्ट कट करके निकाल दो और ऊपर वाला ड्यूडेनम और नीचे वाला ड्यूडेनम को जोड़ दो आपस में. ड्यूडेनोस्टमी. ओके, हमने ड्यूडेनम को ही काटा है और ऊपर वाले और नीचे वाले को ज्वाइन कर दिया. ओके, proximal and distal ones are joined together. And coming on to duodenojejunectomy, duodenum के बाद क्या आता है, jejunum. So we are just the proximal part is joined to the jejunum. So it is rarely done. The most common it is the duodenojejunectomy. Okay. So I hope the annular pancreas is clear to everyone. The pancreatic divisum is clear to everyone. The rotation, the development of the pancreas and how the different parts of the pancreas are formed along with the ducts is clear to everyone. We have discussed the congenital hypertrophic pyloric stenosis in detail, and rotation of the stomach and the development of the stomach. Right? Okay. She says yes, sir. Yes, sir. Let us now answer some of the questions now, guys. I want, before starting with the liver. Now, which of the following statement is not true? Now, guys, you have to. We are going to discuss true or false right now. Now, tell me the A statement. It is true or false? True or false? It can have multiple answers, so no need to worry about that. Pancreatic division is the most common congenital anomaly. So the first statement, Anushka says it is true. Manish says it's true. Yes, guys, it is the true statement, guys. It is the true statement. The second part, pancreatic division is caused by the failure of fusion of dorsal and ventral pancreatic buds. The second part, guys, is it true or false? Aditya says it's true. नहीं बेटा, it's true ना? True होगा अनुष्का. Ventral और dorsal आपस में फ्यूज ही नहीं करेंगे, अलग अलग रह रहे हैं ना. Ventral and dorsal are not fusing with each other. So, so yes, it is also true. Coming on to the third part, annular pancreas presents with bilious vomiting. Tell me, guys, annular pancreas presents with bilious vomiting or not? Most commonly, it is associated with. मोस्ट कॉमनली बेटा, अगर तुम्हें आंसर बताना हो कि वेदर इट इज यस और नो, तो अब तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या आंसर करोगे, ट्रू और फॉल्स. या ट्रू बट इट्स नॉट कॉमन. आई एम आस्किंग यू, इट्स ट्रू और नॉट? मोस्ट कॉमन इज नॉन बिलियस, तो बेटा द स्टेटमेंट इज फॉल्स. There can be chances, but in cases, in the questions where you get, it is like you have to write it as non-bilious. Right? It is non-bilious. Yes. Now, sign seen on annular pancreas is double bubble sign. Tell me, sign seen on annular pancreas is double bubble sign. True or false? True, 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 true. Very good.
Now, management of annular pancreas is duodenojejunectomy. This is a simple statement that is given. Duodenojejunectomy. Again, guys, you have to use your brains. Yes, Sarishta, Anushka, very good. It is false. The most common, the management includes duodenectomy. Duodenectomy. Severe cases like we do this particular thing. Yes. Annular pancreas is due to failure of complete rotation of ventral pancreatic duct. Yes, it is true because these are not. लास्ट वाले का आंसर दे दो बेटा. मैनेजमेंट ऑफ एनुलर पेनक्रियास टाइप. ओके बेटा, मैंने मैनेजमेंट में देखो क्या लिखवाया है. मैंने मैनेजमेंट में लिखवाया है द मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट डन इज ड्यूडेनोस्टमी. जब भी आप एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, यू हैव टू सी द मोस्ट स्टेबल स्टेटमेंट, राइट. वो ट्रू है फॉल्स है उससे मायने नहीं रखता. ड्यूडेनोस्टमी करते बट वेरी रेयर केसेस वी डू दिस. अगेन सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ड्यूडेनोस्टमी ही होगा. ठीक है. तो अगर सेंटेंस में लिखा होता है द मैनेजमेंट इज ड्यूडेनोस्टमी, इन अदर केसेस वी डू दिस, तो it should be a right statement. But yeah, the first thing that has to be there, it has to be duodenectomy, right. और लास्ट वाला बेटा जो इनिशियल रोटेशन होता है ना बेटा, उसको हम लोग नॉर्मली मानते हैं. तो जो स्टार्टिंग वाला जो रोटेशन था दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल बेटा. वो हमेशा प्रेजेंट होता है. इवन इन स्टमक केसेस आल्सो इट इज नॉर्मल. उसके बाद वाला जो रोटेशन होता है दैट रोटेशन इज कंसिडर्ड एज लाइक कंप्लीट और इनकम्प्लीट. तो वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट इज नॉट लाइक, सॉरी डक्ट नहीं है, इट इज बट. ओके हाँ, वो इस वजह से तो कंफ्यूज नहीं हो गया तुम लोग. इट इज बट, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट गाइस, राइट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. हाँ, यू स्किप द मोस्ट कॉमन पार्ट. इसलिए कह रहा हूँ कि वो ना थोड़ा सा यू हैव टू. एफ इज अगेन नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट गाइस, बिकॉज द अर्लियर रोटेशन, द 90 डिग्री रोटेशन अगर तुम सोच के चल रहे हो, इट इज लाइक कॉमन. स्टमक में भी होता है. इट इज हैपनिंग. सो अहमद अबूकार, ओके बेटा, परफेक्ट. Now, guys, question number 2. Which of the following statement is not true regarding the congenital hypertrophic pyloric stenosis? The patient presents with non-bilious projectile vomiting around third to fourth week of life. The A statement, guys. Is it true or false? Is it true or false? हाँ, डक्ट पार्ट की वजह से बोला था ना वो बर्ड है. सॉरी सॉरी सॉरी. ऐसा भी हो सकता है, पता है. ठीक है. तो यू हैव टू एक्चुअली, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी. तो ए स्टेटमेंट इट इज ट्रू और फॉल्स गाइस? ए वाला बता दो. यस, इट इज ट्रू और फॉल्स. अब इसमें क्या दिक्कत है? चलो अब इसमें बता दो क्या दिक्कत हो रही है. फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज फॉल्स गाइस? दिमाग लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इसका रीजन बता दो ये फॉल्स क्यों है. ट्रू कह रहा है आदित्य. व्हाई ट्रू गाइस? व्हाई नॉट फॉल्स? चलो, इट्स बिलियस वॉमिटिंग. और मैंने क्या लिखवाया हुआ है? इट्स बिलियस वॉमिटिंग. 2 to 3 weeks. बेटा वो थर्ड टू फोर्थ वीक में भी आ सकता है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर ओके तो तुम बिल्कुल स्टेटमेंट्स में मत जाया करो. चलो ठीक है. अब देखो, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट गाइस. It can be like the end of the third week or the starting of the fourth week also. Numbers बेटा can vary. अगर बिल्कुल ही initially दिया होता after birth
तो फिर हम लोग उसको ड्यूडनल एट्रेशिया वाले में देखते हैं। ओके, नॉन बिलियस लिखाया हुआ है बेटा, नॉन बिलियस ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। नाउ the second point says the ultrasound findings of pyloric channel more than 4 millimeter thickness and length more than 16 millimeter thickness is diagnostic of this condition. Tell me. Tanupriya says yes, it's true beta, it's true, true. Metabolic abnormality is seen in, okay, Dean लिख दिया, it is seen is hypokalemic, hypochloric, metabolic alkalosis with paradoxical aciduria. The third statement, guys, is it true or false? Yes, it is true, true, true. Now, feeding can be started within 4 to 6 hours after Ramstead pyloromyotomy. Again, I have not completed the statement. You have to see if the serosa, sorry, the mucosa is not injured. If the mucosa is not injured, then within 4 to 6 hours, yes, it's a true statement up till now because I have not mentioned the further point. If the mucosa is not injured, then in approximately 4 to 6 hours, we'll start with the feeding. And if the mucosa is injured in this case, then we have to start the feeding after 24 to 48 hours. Yes. I hope this is clear to everyone. Now, chalo. फटाफट से एक थम्स अप दे दो, फिर विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ द लिवर। थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ लिवर 5 to 10 मिनट्स वो भी देख लेते हैं, देन विल जस्ट ओके। बेटा वो 2 to 3 वीक्स वाला पॉइंट याद रखना, इट कैन बी लाइक मोर देन 3 to 4 वीक्स आल्सो। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये कि या एट बर्थ वो चीज प्रेजेंट है या फिर बर्थ के कुछ टाइम बाद, वो कुछ टाइम जो है, सम टाइम, इट कैन बी 2 to 3, इट कैन बी 3 to 4 आल्सो, राइट। तो इतना स्टिक नहीं होना एक क्या कहते हैं रेंज को लेकर, ठीक है। तो उतना थोड़ा सा प्लीज दिमाग लगाते रहिए अपना, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द लिवर, तो इसमें सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि, चलो इसमें अभी पहले थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, फिर इसका बेसिक डायग्राम हम लोग बाद में भी करते रहेंगे, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द एमनियोटिक कैविटी and we have the yolk sac, right? और बीच में you already know we have this mesoderm, right? We have this mesoderm, now guys we have the neural tube in between in this mesoderm, and we have this notochord. So yes, this is the mesoderm, and mesoderm, the last part of the mesoderm. We have three types of mesoderm, guys: para-axial mesoderm, intermediate mesoderm, and the last one, it is the lateral plate mesoderm, and the last one, it is the lateral plate mesoderm, guys. Lateral plate mesoderm. Now the lateral plate mesoderm, okay, the lateral plate mesoderm has the undifferentiated mesoderm at the cranial end. We already know we have the cranial end and we have the caudal end of, okay, the caudal end, head end and the tail end, head end and the tail end, right? So we have the head end and the tail end. So the lateral plate mesoderm, okay, will differentiate into a structure that is called as septum transversum.
will differentiate into a structure called as the septum transversum. Now again guys, liver is derived from, now the liver is derived from both the structures. It is endodermal also, and it is mesodermal also. It is mesodermal also. It is endodermal also, mesodermal also. Endodermal means it is the yolk sac. It will differentiate into this gut tube, right? It will differentiate into this gut tube. Okay. So yes, this is the foregut. Then we have the midgut, and then we have the hindgut, right? Then we have the hindgut. And outside the gut tube, you already know we have the mesoderm. Undifferentiated splanchnopluric mesoderm is there, right? So splanchno by the visceral organs, it will, all the visceral organs will develop from this particular part, right? Now this foregut has an extension, right? Has a bud which is coming, okay, and this bud, okay, this bud, we have the biliary tract, we have the cystic bud also coming from this foregut, okay. So foregut is endodermal, right? So we have this hepatic bud, okay, and this is the one which we are having, it is the cystic bud. So when I say endodermal in origin, right, so the hepatic bud, endodermal means it is derived from the foregut, or foregut, we have the hepatic bud. Now this hepatic bud will give rise to hepatocytes. This will give rise to the hepatocytes, okay. Plus we have the biliary apparatus. Biliary apparatus. Now when I say biliary apparatus, guys, you should remember I'm talking about the gallbladder, the cystic duct, okay, the bile duct, and the common bile duct, right? The common bile duct. So biliary apparatus, okay, the gallbladder, the cystic duct, the bile duct coming from there, okay. So this part of the liver, the hepatocyte and the biliary apparatus, it is endodermal because it is developing from the foregut. Now when I say mesodermal origin, guys, so you should remember it is developing from the septum transversum. It is developing from the septum transversum, okay, developing from the septum transversum. And remember guys, septum transversum, it will give rise to the stroma of the liver, okay, the stroma of the liver. And when I say stroma of the liver, it means the connective tissue that is present inside, and the macrophagic cells. Can anyone tell me the macrophagic cells of the liver? What are the macrophagic cells of the liver? Can anyone tell me in the chat box? What are the macrophagic cells of the liver named as? Yes, these are the Kupffer cells. These are the Kupffer cells. These are the Kupffer cells. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Which part will give rise to which part? So, फटाफट से एक thumbs up दे दो that all the topics that we have discussed today are clear to everyone. We have discussed the development of the stomach. Tanupriya, very good. We have discussed the development of the stomach, the rotation of the stomach, right? Okay, how it is going, and the congenital hypertrophic pyloric stenosis, the embryological part. Yes, Anushka, Garima, Manish, Nikender, very good. Sarishta, very good.
We have discussed everything: congenital, the clinical features, the diagnosis, the X-ray, the physiological aspect, also the examination, on examination, what you will get, and the management part in detail. After that, I have discussed the development of the pancreas and how the structures, the different structures of the pancreas are formed, the ducts of the pancreas, the two congenital anomalies that are very, very important from the surgery point of view, the pancreatic divisum and the annular pancreas. Okay, I've discussed the clinical features and the management along with that, along with the investigation of choice. That is important. And in the liver, we have seen that which part will give rise to which part. I hope it's clear to every one of you. Yes. So, okay, guys. So let's end the session today over here, and today I'll start. Tomorrow I'll just go briefly about the liver also, and we'll start with the mid cut, right? Yes, I hope it's clear to everyone. So yes, let's end the session now. Okay, perfect, guys. Perfect.